Hello students, good morning and welcome to my YouTube channel Physics by GS Bhoi. Okay students, देखो students previous class से पढ़ाई थिला KVL, Kirchhoff's voltage law और Kirchhoff's second law. Okay, so आज हमें देखिबो new topic that is Wheatstone Bridge. Okay, Wheatstone Bridge very important. देखो Wheatstone Bridge. Okay, Wheatstone Bridge spelling देखो Wheatstone Bridge रो. Okay, very important CHSE. Okay, Wheatstone Bridge plus to second year physics. Okay, Wheatstone Bridge. तो स्टूडेंट देखि दियो डायग्राम एठी कोन कोन लागि छि देखो एठी लागि छि गोटे ईएमएफ ई लागि छि देखो गोटे ईएमएफ लागि देखो ई माने ईएमएफ ओके K1 and K2 देखो K1 and K2 आर द वन वे की ओके स्टूडेंट देखो वन वे की दुइटा लागि छि वन वे की K1 and K2 वन वे की देखो ई माने होछि ईएमएफ और G माने होछि देखो सेंसिटिव galvanometer okay students galvanometer तो what is the function of G or what is the function of sensitive galvanometer रो काम कोन to measure small amount कोन question to measure small amount of current okay small amount of current clear students देखो एठी एठी सेल लागि छि सेल टू करंट फ्लो हेबो आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हेबो देखो आई अमाउंट ऑफ करंट जाय कि पुनी थरे आई अमाउंट ऑफ करंट रिटर्न करिवो ओके आई अमाउंट ऑफ करंट जीवो पुनी थरे आई अमाउंट ऑफ करंट रिटर्न करिवो देखो एठी I1 अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हेबो देखो कोठी AB रे से भला BC रे I1 माइनस IG करंट फ्लो हेबो से भला CD रे DC रे ओके याडे DC रे फ्लो हेबो देखो I माइनस I1 प्लस IG से भला AD रे फ्लो हेबो I माइनस I1 से भला एठी IG रे माने गाल्वानोमीटर कोन करंट फ्लो हेबो IG अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हेबो देखो आउ PQRS आर द फोर रेजिस्टेंस देखि दियो PQRS four resistance like the four resistances okay students four resistances और G टा जानि G टा माने सेंसिटिव बैरोमीटर सेठी IG अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होची BD रे ओके BD रे IG अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होची ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखो थ्योरी देखो थ्योरी माने कोन तो डायग्राम देखि कि तुम थ्योरी निजे लिखिबो ओके स्टूडेंट्स डायग्राम देखि थ्योरी निजे लिखिबो तो एठी कोन देखो व्हाट इज कॉल्ड Wheatstone Bridge देखि दियो Wheatstone Bridge is an very simple देखो Wheatstone Bridge is an electrical arrangement it is arrangement देखो electrical arrangement देखो Wheatstone Bridge is an electrical arrangement used to determine माने व्यवहार करा जिवो used to determine the unknown resistance देखो स्टूडेंट very simple this is the definition Wheatstone Bridge is an electrical arrangement used to determine the unknown resistance okay students next हमें देखो theory देखि दियो theory इति देखो it consists of के Wheatstone Bridge consists of but it consists of four resistances four resistances P Q R S देखो एठी it consists of four resistances P Q R S are connected okay are connected four arms of the square ABCD देखो this is the theory but it consists of four resistances P Q R and S okay are connected four arms of the square ABCD P Q R and S कर दियो R and S देखो it consists of four resistances P Q R and S are connected four arms of the square ABCD okay students एठी a cell of EMF is connected to 2 points on A and C through a one-way key K1 देखो A और C रे K1 कनेक्शन है देखो a cell of EMF is connected 2 points connected at 2 points a cell of EMF is connected
at 2 points कौन A and C through a one way की K1 ओके स्टूडेंट देखो सेबडा एठा I0 कथा लिखिबा G रो galvanometer रो नेक्स्ट लिखि दियो a sensitive galvanometer a sensitive galvanometer of resistance G is connected to 2 points एमती लिख लेबो connected to 2 points connected to कर दे ठीक है एट नहीं connected to 2 points a sensitive galvanometer of resistance G is connected to 2 points कौन B and D 2 points B and D ओके स्टूडेंट देखो एठी a cell of EMF E okay a cell of EMF E टे लागि देखो a cell of EMF E is connected to 2 points A and C through a one way की K1 okay students next देखि दियो रेजिस्ट माने I0 कथा लिखिबा IG माने कोन G galvanometer a sensitive galvanometer okay a sensitive galvanometer of resistance G is connected to 2 points B and D through another one way key K2 another one way key K2 okay student देखो तापर कोन हबो जेते आफ्टर प्रेसिंग K1 and K2 जेते हमें one way key दुईटा को प्रेस करिबा कोन हबो करंट फ्लो हबो एमिति सब करंट फ्लो हबो से जगह रे कोन हबो IG रे कोन करंट फ्लो हबोनी ता माने कोन जी galvanometer डिफ्लेक्शन देखेबोनी माने एठी कोन हबो IG रे वैल्यू 0 माने करंट फ्लो हबोनी माने कोन G रे वैल्यू ऑटोमेटिकली galvanometer has no deflection so that is called that condition is called balance condition of Wheatstone bridge okay students लिखि दियो okay next लिखो after closing or pressing कहिबा after closing the two key K1 and K2 okay after closing two key K1 and K2 the resistances कोन P Q R and S okay are so adjusted माने adjust कराई छी are so adjusted that the galvanometer has no deflection okay after closing the key K1 and K2 the resistances P Q R and S are so adjusted that the galvanometer show no deflection ता माने कोन that means no current flow across the arm BD across the arm BD ता माने जते बड़ हमें K1 और K2 को स्विच में प्रेस करिबा कोन हबो देखो K1 K2 स्विच प्रेस कोले मत करंट आइडी फ्लो हेबो करंट सबरे फ्लो हेबो किंतु ए galvanometer देखि करंट फ्लो हेबोनी ता माने कोन एठी IG वैल्यू 0 करंट वैल्यू 0 माने एठी 0 हैला माने कोन दैट इज द बैलेंस कंडीशन माने बैलेंस कंडीशन ऑफ Wheatstone bridge ओके स्टूडेंट देखो आफ्टर क्लोजिंग द की K1 and K2 closing the two key K1 and K2 the resistances PQ R and S are so adjusted that the galvanometer show no deflection that means no current flow across the arm BD okay students across the arm BD लिखि दियो this condition is called this position okay this position is called balance position okay balance position this position is called balance position okay students एबे देखो applying KVL Kirchhoff voltage law applying KVL to the mesh first हमें देखिबा ABD रे to the mesh ABD देखो ABD रे एटे सबले कोन काली कहैतिला पाथ व्यवस्था से कहैतिला कोन सबले पाथटा कोन आंटी क्लॉकवाइज नबो
दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज देखो दिस इज द डायरेक्शन पाथ डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिस इज द पाथ तो एठी कोन नबा अप्लाइंग किर्चॉफ वोल्टेज केवीएल टू द मेश एबीडी तो फर्स्ट नै जो कोन हबो देखो एटा दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पाथ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट ला माने कोन अपोजिट सब बेले कोन पॉजिटिव दैट इज I1 into P पॉजिटिव देखो से भलिया एठी कोन हला देखो एठी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पाथ दिस इज द करंट एटा along हला हमर नेगेटिव दैट इज minus I1 into R प्लस एटा कोन हबो देखो एठी दिस इज द पाथ दिस इज द करंट कोन हबो अगेंस्ट हला माने अगेंस्ट हला कोन पॉजिटिव दैट इज प्लस Ig into G इज इक्वल टू 0 एठी 0 कोन पाई हला देखो इट नो ईएमएफ ईएमएफ एठी एबीडी रे ईएमएफ लाइछ की ईएमएफ किछि लागि नै ता माने कोन इक्वल टू 0 हला देखो देयर इज नो ईएमएफ इन द मेश एबीडी सो इक्वल टू 0 हला देखो से भलिया अप्लाइंग केवीएल टू द मेश बीसीडी रे देखिबा बीसीडी रे अप्लाइंग केवीएल टू द मेश बीसीडी बीसीडी रे कोन हबो देखो बीसीडी रे कोन हबो एटा इक्वेशन 1 देइछा बीसीडी रे हबो देखो एंटी क्लॉकवाइज देखो पाथ एंटी क्लॉकवाइज दिस द डायरेक्शन ओके तो फर्स्ट कोन हबो देखो फर्स्ट एटा नै जो दिस इज द देखो डायरेक्शन ऑफ पाथ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट तो कोन हला पॉजिटिव ता माने I1 minus Ig into Q ओके into Q ता माने तापर कोन हबो देखो एटा देखि दियम तो एटा देखो दिस इज द पाथ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एटा along हला माने नेगेटिव दैट इज minus Ig into G तापर कोन हला देखो दिस इज द पाथ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एटा along हला माने नेगेटिव हबो देखो दैट इज minus I minus I1 plus Ig into S होची देखो रेजिस्टेंस ला S इज इक्वल टू 0 देखो into 0 एटी S into S होची देखो एटी कर दिया into Ig into S इज इक्वल टू 0 ओके एटा I1 टा करंट फ्लो होची देखो एटी I1 टा करंट ओके इक्वेशन 2 दे दिया गिव इक्वेशन नंबर 2 देखो ए भल से देखो इक्वेशन 1 और 2 देखि दिया भल से इक्वेशन 1 रो भलो कोन एटा ट्रायंगल एटा होची मेश रो एटा एबीडी मेश रो देखो एटा होची एबीडी मेश रो एटा बीसीडी मेश रो तो एबे कोन करबा देखो फॉर बैलेंस कंडीशन कोन हला बैलेंस कंडीशन रे कहार वैल्यू पुट करबो Ig रो वैल्यू 0 पुट करबो Ig रो वैल्यू 0 पुट करबो फॉर बैलेंस कंडीशन Ig इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन 1 एंड 2 रे पुट करबो Ig रो वैल्यू 0 पुट करबो इक्वेशन 1 और 2 रे फॉर बैलेंस कंडीशन Ig इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 एंड 2 तो 1 रे पुट करले कोन हबो देखो 1 रे पुट कर दे Ig जगह 0 दैट इज I1 into P minus I minus I1 into R हबो देखो एटा 0 ही जीवो इज इक्वल टू 0 एटा इक्वेशन 3 दे दियो देखो एटा Ig जगह 0 पुट हला माने एटा ही रहिला देखो इक्वेशन 3 एंड लिखे दोछि देखो लिखे दोछि ओके देखो इक्वेशन 3 हला तो इक्वेशन 2 रे पुट को Ig जगह 0 पुट करो तो कोन हला दैट इज फर्स्ट देखो I1 एटा 0 पुट करो दैट इज I1 into Q देखो तो एठी 0 पुट ले 0 हला 0 Ig into G 0 minus I minus I1 Ig 0 into S is equal to 0 एटा को इक्वेशन 4 कर दियो गिव इक्वेशन नंबर 4 गिव इक्वेशन नंबर 4 देखो स्टूडेंट्स ओके एबे कोन कर इक्वेशन 3 को सॉल्व कर दियो एटा सियाडे नै जाओ I1P is equal to कोन हबो I minus I1 into R ओके बोलेला देखो फर्स्ट मेटा ना इक्वेशन इक्वेशन 3 को निया गला ठीक अछि इक्वेशन 5 कर दिया गिव इक्वेशन नंबर 5 सो एटा को सॉल्व करो दैट इज I1 into Q इज इक्वल कोन हला I minus n सियाडे पड़ेला देखो एटा सियाडे पड़ेला into S इक्वेशन 6 दे दियो ओके एबे कोन करबा देखो एबे हमें करबा डिवाइडिंग इक्वेशन 5 बाय इक्वेशन 6 कर दे डिवाइड कला पर कोन मिलबा देखो दैट इज I1P by I1Q is equal to I minus I1 into R by I minus I1 into S ओके स्टूडेंट देखो I1 कैंसिल I1 कैंसिल तो माने कोन हला P by Q is equal to R by S this is the balance condition of Wheatstone bridge P by Q R by S इक्वेशन 6 दे दियो
ओके गिव इक्वेशन नंबर 6 तो 6 टा एठी लिखि दोछि देखो इक्वेशन 6 टा कोन हला 7 दे 6 जेछि माने 7 कर दियो ओके इक्वेशन 7 दे दियो ओके इक्वेशन 7 दे दियो आउ तो लिखि दोछि p by q is equal to r by s this is the लिखि दियो equation 7 is the required condition required condition for balanced okay देखो equation 7 is the required condition for balanced or this condition is called balanced Wheatstone condition balanced Wheatstone bridge भी कहि पाइ balanced Wheatstone bridge this condition is called balanced Wheatstone condition ओके स्टूडेंट देखो p by q is equal to r by s ओके एठी कोन हला देखो चेटे रेजिस्टेंस p लागिछि q लागिछि r लागिछि s लागिछि एठी कोन हबो एटा s देखो जदि मन तीनटा रेजिस्टेंस p रा वैल्यू गिवन थिबो p रा वैल्यू गिवन q रा वैल्यू गिवन देन r रा वैल्यू गिवन देन s रा वैल्यू जणा नै अननोन ता माने कोन s रा वैल्यू फार्मूला भाबो s रा फार्मूला केमि डिटरमाइन करबो s रा फार्मूला केमि बाहर करबो दैट इज ps is equal to ps is equal to qr or s is equal to कोन हबो s is equal to कोन हबो देखो दैट इज q into r by p ए फार्मूला बाहर करि पारबो देख ए फार्मूला रे s रा वैल्यू बाहर करि पारबो तमे s is equal to qr by p ए फार्मूला बाहर करिवो दिस इज द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस s रा वैल्यू जणा नथिला तो s रा वैल्यू जानि पारिबो ओके ओके स्टूडेंट्स जदि ए वीडियो जदि भल लागुछि माने काइंडली लाइक करो शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो आ पाखर थियो बेल आइकन को दबाई दियो ओके स्टूडेंट्स जदि वीडियो जदि भल लागुछि माने काइंडली शेयर करो समस्त को ओके प्लस 2 फर्स्ट पिला शेयर करो प्लस 2 सेकंड ईयर पिला को शेयर करो और प्लस 3 फिजिशियन पिला को शेयर करो वीडियोटा आसीबो ओके स्टूडेंट्स बाय